Hello, hi everyone. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Just give me a minute. I'm really sorry for this. Yeah. Amna and Khadija, are you guys still here? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. We have done till yeah, metaverse, right? Amna, Akib and Khadija. We have done till metaverse, right? आप लोग तीनों थे क्लास में? No, sir, maybe. नहीं, कहाँ तक किया आपने आकिब? Sir, यहीं तक metaverse तक. Metaverse तक ना? Okay. What about you guys, Amna? Yes, sir. Metaverse तक तक किया करा। है आपने? यहीं तक करा? जी। After metaverse, we have functional group isomers, right? Yes, sir. Right, functional group isomers. Okay. Now, in functional group isomers, what will be same? Molecular formula is same, but
What will be different? Tell me, guys. Structure. नहीं, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट रहेगा ना. जैसे आप याद कीजिए, when we said we are having structural isomers, so in structural isomers the name of the isomers is derived like whatever is different. So if it is structural isomers, then molecular formula will be same but structure will be different, है ना. Similarly, if we then classify structural isomers into different classifications where we had chain isomers, so in chain isomers molecular formula is same but what is different? The parent chain is different. So isomers are named by what is different, है ना. उस हिसाब से बताइए. Yes, sir. Functional group isomers में molecular formula is same, but what will be different? Parent chain? नाम से बताइए ना. See, the name is derived with what is different. Chain में तो chain different होगा. Functional Position group will be isomers में different. हाँ, functional group will be different. Got it, Amna and Aqib? Yes, sir. What about you, Yes, Amna? Functional group is different. ठीक है. So in this, the first one that you have to learn is aldehyde and ketone. Okay, so we have a 3 carbon atom ketone group and we can have 3 carbon atom aldehyde group also. Okay, so in this case for the ketone, can you count the number of carbon atoms? How many carbon atoms are there in the ketone? Yes, Aqib. Sorry, sir. How many carbon atoms are there in the structure? 2, नहीं, फिर से देखिए. 1, 3. 1, 2, 3 है 3. ना. ठीक है. So we have Yes, 3 sir. carbon atoms. Okay. Here, this is one carbon, this is another carbon, this is another carbon atom. Now, this carbon atom here, it is having 3 hydrogen. This carbon atom here, it is having 3 hydrogen. Now, this carbon atom is having 0 hydrogen because it is already having 4 bonds. So we have C3H6 and there is one oxygen atom, है ना. अच्छा, tell me here, how many hydrogen atoms in this carbon? 3. 3 Three. hydrogen atoms, right? What about this one? How many hydrogen atoms Two. here? 2 2. hydrogen atoms. And here we have 1 hydrogen atom, right? So here also we Yes. have C3H6O. Correct? है ना? Yes, sir. So molecular formula is same, but in one of the अगर आप इसका नाम भी लिखेंगे ना, so in that name it will be reflected. For example, we have 3 carbon atoms, so it will be propane 2-one, right? And this is propane aldehyde. नहीं, propane aldehyde नहीं, propane null हो जाएगा, right? So here we have on and here we have al, right? So other things are not different. So propane, propane, है ना? Propane. Yeah. So other things are same here. Propane here, but here we have on, here we have al. So what is different? Functional group is different, but the molecular formula is same. From here we can say that when aldehyde and ketone, they have same number of carbon atoms, but the group will be different. तो वहाँ पे you can have functional group isomers. Similarly, आपको isomers मिलेगा between alcohol and ether. Alcohol and ether. ठीक है. So in alcohol, let us suppose we have this OH, 2 carbon atoms and then OH. Here we have CH3, O, CH3. ठीक है. अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें, then how many carbon atoms we have? We have 1 carbon atom, 2 carbon atom. Here we have 3 hydrogen, here we have 2 hydrogen and 1 more hydrogen here. So we have C2H6O. Here we have 1 carbon, 2 carbon, C2, 3 hydrogen here, 3 hydrogen here, H6 and again O. But here we have alcohol and here we have ether. Got it? Yes or no? Please tell me, Amna and Aqib. Can you see? Yes, sir. The functional groups Yes, are sir. being different, but the molecular formula is same. Okay. Now there is one more. These are the important ones जो आपके NCERT ने दिया हुआ है. Another you can write is between carboxylic acid and ester.
Can you count the number of carbon atoms in both these structures? Carbon atoms as well as the hydrogen in both these structures, and send me in the chat. लिख लीजिए से सारा aldehyde, alcohol, ester वगैरह सब कुछ लिख लीजिए. And then when you are done with carboxylic acid, count the number of carbon and hydrogens, and then send the answer on my chat. चलेगा? Amna and Akib? Yes, sir. Yes, sir. Write it quickly. What will be the formula, Akib? Sorry, sir. Your formula. Like C3, how many hydrogen, how many oxygens, as we have written here. Okay, sir. I'll write then. Amna, you forgot the क्या नाम है इसका? The oxygens. Oxygen भी तो है आमना. फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? आमना फिर से थोड़ा सा मिस हो गया आपसे. 2 ऑक्सीजन है ना, so it will be C2H6O2. Here also it will be C2H6O2. Sir, it should be 3, right? Because one C is My here. bad. Yeah, correct. My bad. वो मतलब मेरे Okay. से sorry. C3 होगा. 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन. या आमना, got it? Yes, sir. Okay. So if they ask you to write the functional group isomer of aldehyde, you will write the ketone structure if with the same number of carbon atoms. If they ask you to write the functional group isomer of alcohol, you will write the ether with same number of carbon atoms. If they ask you to write the functional group isomer of carboxylic acid, then you will write an ester with the same number of carbon atoms. You got it now? How to do it? Yes or no? Amna and Yes, Akib. sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए. के बाद लिखिए ring chain isomers. This is the 5th isomer. ठीक है. In ring chain isomers, what will happen? Molecular formula will be same, but one of the structure will be a ring and the other structure will be a chain. ठीक है. So please write molecular formula is same
but one structure is a ring and the other is a chain and the other is a chain. इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है that is this is not there आपके 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में, बट स्टिल पूछा जा सकता है आपके स्कूलों में. आप इसमें लिखिएगा एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन. ठीक है. So for example, if you have 3 carbon atoms or a double bond, how many carbon atoms here are here? Tell me, guys. C3 3. and hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिर से काउंट कीजिए एक बार. How many hydrogens? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपके? याद नहीं है सर. याद नहीं है. CnH2 ऐसे करके होता है ना, CnH2n ऐसे करके. याद नहीं है? अच्छा काउंट करें ना फिर तो. काउंट करें. 6. 3 हाइड्रोजन. Here will have how many hydrogens? यहाँ पे 2. 1. 1 होगा ना. हमने 3 bonds you can see. 3 बॉन्ड हो गए, एक बचा हाइड्रोजन, राइट? Yes. And here you will have 2 hydrogens, right? So total कितने हो गए? C3H6. Similar will be the formula. Same formula होगा आपके पास if you have cyclopropane. ठीक है. So in this you can see that here each carbon atom is having 2 bonds. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन. So it will be C3H6, है ना? उसी तरह से आपके पास you can have 4 carbon atoms. अब देखिए 4 कार्बन आटम्स में ना आपके पास you can have this structure और this structure. ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है? डोंट राइट एनीथिंग. These two structures are position isomers. ठीक है. But both of these structures, if I take both of these structures, then both of these structures are ring chain isomers of the cyclobutane structure. ठीक है. तो if they ask you draw a ring chain, how many ring chain isomers are possible for cyclobutane? Then there are 2. ये भी एक आइसोमर है और ये भी एक आइसोमर है, right? Both of these are isomers for cyclobutane. But if they ask you how many ring chain isomers is for but1 या but2, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रिंग है. So for from ring to chain there are 2 structures. लेकिन चेन से रिंग के लिए आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है. Got it? Yes or no, please tell me. Yes sir. Yes, ये sir. दोनों ही इसके आइसोमर्स है ना. ठीक है. इसको ध्यान रखिएगा. And both of these but1 and but2 are position isomers. ठीक है. अब उसके बाद उसी तरह से आपके पास एक और बन सकता है. You can have 3 carbon atoms like this, और किसी एक कार्बन पे you will have methyl group. So here also if you count the number of carbon atoms, we have 3 in the chain. यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन है. So in total we have how many carbon atoms? We have C4. Hydrogen is 2 2 4 1 5 5 3 8 H8. Here also you will have C4 H8. Here also you will have C4 and H8. ठीक है. So all of these are what? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? Ring chain isomers, and these two are also ring chain isomers, right? This one and this one is also what? Ring chain isomers. ठीक है. So please draw this for 4 carbon atoms. अब if you go to the 5 carbon atoms, उसमें और number of ring chain isomers will increase. 6 carbon में और increase करता चला जाएगा. ठीक है. Please write this down. Let me know once you're done. Raise your hand once you're done.
You guys are done writing? सिक्स्थ वन में लिखिए टॉटोमर्स. टॉटोमर्स से पहले समझ लीजिए होता क्या, देन वी विल राइट द स्टेटमेंट व्हाट आर टॉटोमर्स. लेट अस सपोज आपके पास you have a alcohol and this alcohol is not a simple alcohol. ये basically ऐसा alcohol है, the carbon atom which is involved that is having the OH group is also having a double bond. ठीक है? So we call this type of species enol. Why do we call it enol? Because this double bond is En and this OH group is all, right? So it is a enol. Now let us expand this structure. Please don't write now, है ना, ध्यान से देखिएगा. अच्छा आप बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव between hydrogen and oxygen? Who is more electronegative? Tell me, Akim. Hydrogen. Oxygen. Oxygen. आपको पता नहीं क्या Fluorine. खाया आप लोगों ने Yes. जुमा के बाद? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना. ऐसे फोन, कल, बिहारी, इश्क प्यार है, इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, राइट? Yes, sir. So since oxygen is more electronegative, it is going to pull electron density from the hydrogen atom, making hydrogen electron deficient with a delta positive charge. Now, nearby hydrogen atom, we have a electron rich side, that is the pi bonds. Pi bonds are very high in electron density. So what will happen? This pi bond will attack onto the hydrogen atom. As soon as it will attack on the hydrogen atom, the bond between oxygen and hydrogen will break and it will shift towards the carbon oxygen bond like this. And there will be this is kind of a reaction, intermolecular reaction going on, but both of these reactions are reversible in nature, and you will see a chemical species which looks something like this. Double bond O. And this particular carbon atom, which was originally having only one hydrogen, it will now have the existing previous hydrogen atom as it is, and the new hydrogen atom also. So this hydrogen atom is the one that was attached with oxygen atom previously. बात समझ में आई? Now, why it is happening? Again. The driving force for this particular intermolecular reaction is the electronegativity of oxygen atom and the availability of pi electron. So pi electron is negatively charged. Hydrogen is having delta positive, so electron will be attracted towards hydrogen atom, and they will movement of electrons forms bond. So this carbon atom that is having the pi bond, it is making bond with hydrogen atom. The hydrogen atom cannot make more than one bond. That is why it is going to break this bond. दो bond तो बना ही सकता है. It will break this bond and then it will form a ketone group. So it is moving from enol structure to keto structure. Got it, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Please इसको बनाइए आप लोग and then you can write. इसमें लिखिएगा. ऐसे लिख लीजिए. Keto enol tautomerism is an equilibrium between an aldehyde or ketone with structural isomer called enol form.
in tautomerism, there is an exchange of hydrogen atom between two different atoms. ठीक है, इसको प्रोटॉन ट्रांसफर भी बोलते हैं. एंड बिटवीन कीटो इनॉल फॉर्म्स, कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल. कीटो फॉर्म is generally predominant and more stable. Raise your hand once you are done writing. Okay, all of you are done. ठीक. अच्छा खदीजा, यू आर हियर. अब हाँ ना कुछ तो बोल नहीं रही हैं. चलिए, write a question. How many structural isomers are possible? How many acyclic structural isomer are possible for a compound with molecular formula लिखिए आप C4H8. चलिए, basically सबसे पहले तो you have to understand what is the basic structure that you can write for C4H8. So 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन चाहिए आपको. So draw a basic structure of C4H8, whatever you can draw, and send it on my WhatsApp. आमना एंड आकिब वो हो जाएगा, आमना आकिब एंड खदीजा. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होने चाहिए ना, काउंट करके बिल्कुल कीजिएगा. ऐसा ही नहीं कि 4 कार्बन बना के आपने भेज दिया. बात समझ में आ रही है? आमना आकिब एंड खदीजा. Yes, sir. ठीक है, चलिए, सेंड ऑन माय व्हाट्सएप.
यस आकिब करेक्ट, वेरी गुड। वो C4H8 आपका सही है। कैन यू मेक, डबल बॉन्ड को आप शिफ्ट कर सकते हैं कहीं, तो वो एक पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा। Yes, sir. हाँ आकिब, है ना, ट्राई दैट। Okay, sir. आमना आपसे C4H8 नहीं बन पाया? 1 minute, sir. Sending. अच्छा, अच्छा दूसरा हो गया, वो भी सेंड करूँ? सॉरी व्हाट आकिब? No, I did second one. Should I send you? हाँ हाँ, सेंड इट टू मी, सेंड इट टू मी। यस Okay, आमना, sir. आप भी डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर। Yes, sir. ट्राई शिफ्टिंग एंड सेंड मी, जो भी आपको लगे कि अलग अलग नया नया स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, नाउ आकिब यू ट्राई टू राइट द नेम ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री वट एवर यू हैव मेड। ठीक है आकिब? Okay, sir. अच्छा, ऑल्सो मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि सेकेंड और थर्ड सेम है या डिफरेंट है, क्या लग रहा है आपको? Opposites हैं? दे आर डिफरेंट। Most probably. हाँ, नाम लिख के देखें आप, ट्राई टू राइट द नेम देन यू विल अंडरस्टैंड। Okay, sir. अच्छा, एंड आमना आप क्या करें, यू ऑल्सो राइट द नेम ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर दैट यू हैव ड्रॉन। ठीक है? Okay. Send me once you're done, okay? Amna and Akib on WhatsApp.
Yes, Amna, correct. What about you, Akim? Doing, sir. Doing? बड़ा time लग रहा है. Yes, sir. Not getting, sir. भाई कब तक चलेगा ये नॉट गेटिंग? चलिए देखिए, और खदीजा तो ऐसी चुपचाप बैठी हुई, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट वन यू मेड, दिस इज द अनदर वन you made, and this is the another one you made, right? अब तो कुछ तो स्टार्ट करो भाई. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? कुछ नहीं है यहाँ पे. 4 कार्बन एटम से तो ब्यूट 1 2 3 4. सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड EN, फिर E. दिस विल बी ब्यूट 1 ENE. अब यहाँ पे भी देखिए, द डबल बॉन्ड स्टार्टिंग विद दिस टर्मिनल ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4. सो दिस इज ऑल्सो ब्यूट 1 इन. So both of these structures are looking different, but they are same. समझ में आया आके? Yes, sir. है ना? ठीक है. अब देखिए, both of these structures are completely same. अगर आप यहाँ पे इसको बस रोटेट कर दीजिए आप, सेम स्ट्रक्चर बन गया ना? हाँ जी, Yes, sir. है ना? सो रोटेशन करने से चीज तो चेंज होगी नहीं, करेक्ट? दैट इज वाई इफ यू आर रोटेटिंग थिंग्स, पहला वाला जो स्ट्रक्चर ना, दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर हियर, no matter how much you rotate it, it will never change to the second. If you want to change the first structure को अगर second में बदलना है, उसके लिए आपको bond तोड़ना पड़ेगा. The double bond is between the second and third carbon atom. You have to make it first and second carbon atom. There is one more isomer that is possible, which is like this: 3 carbon atoms, 4th carbon atom, और इसी का यहाँ पे double bond. Okay, so double bond between any one of them, ये भी आपको बन जाएगा. See, so this is also a structure possible. This is also structural isomer. So first one, the initial ones are position isomers, और ये जो है आपका, this is chain isomer. You can count the number of carbon atom and the hydrogens. You will see that this is also C4H8. Is both of you done writing? Yes or no? Please tell me. अच्छा, इसका नाम लिखे ना जरा. Try to write the name of this structure. Okay, sir. इसको फिल करने की कम से कम कोशिश कीजिएगा. फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, पेरेंट एंड देन सब्सिक्वेंट.
Guys, Amna and Akib, what happened? Done, sir. Send it to me. Okay. मीटिंग आमना आपका हुआ? Yes, sir. नाम लिखा आपने? नेम? 1 minute, sir. नेम लिखिए। प्रोफाइल, अरे भाई साहब भूल गए यार, आके प्रैक्टिस करो यार तुम लोग। देखो देखो, चलिए हम बता देते हैं। फंक्शनल ग्रुप कुछ तो है नहीं, तो ई हो जाएगा। अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा, है ना। पेरेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन आइटम दैट हैज फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर अनसैचुरेशन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन 3 कार्बन, तो इट विल बी प्रॉप। सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, सो दिस होल थिंग हैज बीन इन द पफ। सब्स्टिट्यूएंट बचा एक, दैट इज CH3, तो हो जाएगा मिथाइल। and methyl is in the second carbon, so it will be 2-methyl prop 1-ene. Chaliye, please write this down. Done, sir. Done, sir. Okay. तो आज के लिए इतना ही, and in the next lecture we will start with organic reaction mechanisms. Okay, so those will be important classes, but please यहाँ तक आपको ना crystal clear रहना चाहिए बिल्कुल. But you will should have good idea about what is isomers. You should have good idea about the nomenclature, naming compounds की. We have so many structures that you can name, है ना. देखिए जो हम लोग की पहली क्लास स्टार्ट हुई थी, from there itself you can start. फंक्शनल ग्रुप में देखिए, see all of these structures can be named now. अब ये 1 2 3 4 5 6 10 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इनका नाम लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद when you move on to the unsaturation part, unsaturation में भी आपके पास कितने 6 स्ट्रक्चर्स हैं, so try to write the name of all of these structures. Then you have parent chain में भी आपके पास you have a few, कहाँ गया, हाँ जी. So in parent chain also you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 structures. इन 11 का आप क्या लिखने की कोशिश कीजिए, नाम लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। Then after parent chain you would have नंबरिंग में तो ज्यादा एग्जांपल नहीं होगा, आइडेंटिफाई पेरेंट चेन में फिर से आपके पास 4-5 स्ट्रक्चर्स है। सो इन योर नोटबुक यू विल हैव प्लेंटी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन नेम, ठीक है।